Morning to all the faculty members when present here and to Dr. Ekta Sinotra. First of all, I would like to our sincere regards and thanks to Dr. Ekta Sinotra to take her time out from her busy schedule and to deliver an expert lecture on artificial intelligence to our students. We will have some brief introduction about Ekta, Dr. Ekta. She is currently working as an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering at JP University, Varanaghat. She has around 10 years of teaching and research experience. She has completed her PhD in Computer Science and Engineering from Peck University of Technology, Chandigarh. She obtained her MTech in Computer Science and Engineering from Kurukshetra University, Haryana, and she has been a rank holder throughout her studies. Her research interests are network and cybersecurity, malware threat profiling, cyber threat intelligence, machine learning, big data analytics, and many more. Now I would like to request to Dr. Bhandotra to take over the mic and deliver her expert lecture. Thanks, madam. Thank you so much, sir, for this introduction. And I would like to thank Pankaj sir and Samir Bharti sir, director sir, for inviting me this lecture and to interact with the young minds of your college. So now I'm going to start. I'm so sorry for the technical glitches. I don't know. It never happened, but anyways, if I'm setting my presentation in the presentation mode, even then I'm not able to see all of you. But anyways, if there is any problem, you can please interrupt me, right? Is it okay now? Yes, ma'am. Okay. It's working good. Okay. So the topic that I have chosen for delivering this lecture is recent trends, challenges, and opportunities in artificial intelligence. Basically, when I was invited to deliver a talk on artificial intelligence, I just went through the syllabus of you guys, जो आपका जो भी website पे जो syllabus है, and I came to know that you are not doing machine learning till the third year of your course. So that is why I thought just to give you an introductory part to the artificial intelligence. So we'll try to keep this lecture as interactive as possible, right, students? Right, students? So here, first of all, can I? Is there any option to interact with the students? I mean, अगर मैं उनसे कोई question पूछूं, will they be able to answer if there is mic option or something else? Mic on hai, and if anybody can want to answer, he or she can, right? Okay. Okay. First of all, I would like to ask, can you give me some examples in your daily life where we are making use of artificial intelligence? Basically, rather than a lecture, I just want to explain it in an interactive way, just to give you an idea what is machine learning, what is artificial intelligence, and how do these technologies work. Yes. Anyone, can you give me some examples of artificial intelligence from your daily life? Google Assistant. Google Assistant, right? Google Assistant. What else? ChatGPT. You're saying ChatGPT.
Okay, chaliye, anyways, let us start with the presentation. I'm not able to hear you properly. So here, can you tell me who is this beautiful lady? Have you ever seen this beautiful lady? Can you give me the name of this lady? Anyone? No, this is Sana. Have you heard the name? Sana is an AI anchor on Aaj Tak. Can you hear me? Yes, ma'am. She is Sana. She is AI anchor um, uh, from Aaj Tak. You must have seen her, but maybe you are not able to recognize her. ChatGPT, an open AI's ChatGPT. Have you used it, ChatGPT? Bolo, yes. Yes. Have you used? For what purpose you are using it? Assignment solve करने असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए वेरी गुड हाँ असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए बिकॉज नो नीड टू गूगल योर क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन को एक बार गूगल करेंगे even then you need to decide which answer is correct, but chat gpt is giving you the right answer in the first attempt. Okay, what is this Copilot? Have you heard about Copilot? Yes, Copilot. Copilot is similar to ChatGPT, but here it is owned by GitHub. It has been developed by GitHub, right? So other examples of AI around us is, can you see this picture? This type of picture you must have seen on your social medias like Instagram, on YouTube, on your Facebook accounts, where just by swapping the faces, you're creating some funny pictures. Have you seen such type of pictures? Tools, so many mobile applications by making use of which you can just swap by simple clicks, you can swap the pictures. Have you heard about deep fake? Yes, ma'am. Can anybody tell me what is deep fake? And face swapping. Again, swapping of some images, or you can say simple image is where you can create any type of video which is maybe related to pornography or some video lecture announcement by Modi ji, some important announcement by Modi ji, which is basically abhi rules bane hain, rules and regulations nahi bane hain, but yes, now we are having some tools which are able to detect these deep fake videos or pictures. But by making use of AI tools, you can create such type of pictures. Okay, can you tell me what this person is doing? What this person is doing? Any guesses? He's trying to unlock his phone by making use of his face. Right. So it means this is an application of face recognition, which is again based on AI. And face recognition is not only just to unlock the phone, but there are many other applications of face recognition. You can say, if I talk about attendance monitoring system, by using face recognition, we can take attendance in the class as a part of smart classrooms, where suppose a camera is mounted in the classroom, and on a single click the attendance of all the students who are present in the class will be taken, and the students who are not present in the class, they'll be automatically marked absent. So this is again AI. This is conversion of text to video. Again, there are many web applications or mobile apps by making use of which
If you provide a text to the mobile application, it will create a video for that. It will create a video. मतलब text को it is converting to some video or maybe audio depending upon some tools. This is text generator. This is just reverse of this thing. Text generator means if suppose there is an application, there is a web application, and you are uploading an image, and it will be able to generate a text for you. Can you imagine? It can generate a story for you from a simple image. चाहे वो image deep fake image है, चाहे deep fake image नहीं है, it can generate a story for you on the basis of an image or text or you can say video. Even my students, my final year students, they are working on this project. They have created web application. They have made use of GAN model. What they have done, they have created a web application where the user interface allows you to upload an image, and they will provide some context to that image. Context maybe horror, maybe entertainment, and the tool will be able to generate a story, text related to that image. This is again AI. There are many tools available or web applications which are available for doing this. See this thing, this is, you know what is it? We'll say it Google Map. By making use of Google Map, you can create many applications. For example, जो आपकी ये जो taxi hiring जो Uber है या Ola है, they are able to predict that in what will be the कितना distance है आप इस place से इस place तक अगर आप जाना चाहते हैं तो कितना उसका जो है distance होगा. अगर आप taxi से जाना चाहते हैं तो उसका क्या जो Uber and जो ये taxi services हैं, how they will charge from you or exact price they'll be able to tell you. Even if on some particular route, if there is some traffic, they'll deviate the path for you and again will calculate the fare or price for that taxi. So all these are the applications of artificial intelligence around us that we are making use of. Now, I'll be discussing what is the meaning of AI. Basically, what is AI? We are using a lot of applications of AI around us, but what is the meaning of it? It is nothing, but it is to make the machines think like human beings think. जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, we can make the machines, and those machines will be able to do work like us, right? They'll be able to think, और सिर्फ काम करना नहीं है, efficiently they'll be able to do the work. They mimic human behavior. They can automate the task. You understand the meaning of automate? Automate the task. Automate means the thing आपने कुछ input दिया and it is able to do the work for you. And then make decisions. Various type of decisions you can make by making use of AI. Then analyze large amount of data. Large amount of data. Suppose there is a database and you want to analyze that data to extract some important information from that data. So what is AI? We'll say the AI is to make machines think like humans so that they can take any decision, they can solve the complex problems, they can perform high-level computations that maybe human beings may not be able to do that. And with increased accuracy, the accurate result you will be able to get. Right? Again, artificial intelligence is having applications in the field of education, construction, gaming, retail, banking, agriculture, military, in every field, wherever you see nowadays,
artificial intelligence is being used. We'll take some examples from our daily life where we can see that this artificial intelligence is being used. So first application I'm taking as email filtering. I have tried to take examples with which you are familiar, like email तो सभी use करते हैं. Everybody use email. Can you tell me how it is decided that which email will go to spam or in specific folder or in some other folder or in the inbox? Can you tell me? From the basis of artificial intelligence, it's true. But how artificial intelligence is able to fit your emails, whether it is spam email or non-spam? Can anybody can make it? Let us try to make this session interactive. तभी आपको समझ आएगा. मैं आपको सिर्फ यही समझाने आई हूँ. What is artificial intelligence? Anyone would like to answer? Okay, see, here we are having email filtering. Basically, what we do, we are having some features in our email. For example, from where our email is coming, what is the content of that email. On the basis of these features, your email system, your email filtering system is able to decide which email will go to the spam and which will go to your inbox. That is again on the basis of some features. These are the personal assistant devices. Amazon has launched its Alexa assistant is there, and Microsoft's Cortana is there, where they are able to recognize your speech recognition ability is there, and whatever you are saying, they are able to give you reminders. They are able to act as your personal assistants. So no need to keep the man as a personal assistant. So these are the devices which act as the personal assistants for a person. Then recommendation system, if we talk about, you must have seen in YouTube or in Netflix, you must have seen whenever you see a song, या आपने कोई भी song, या suppose आपने कुछ Python, आपने कुछ कोई भी content, whenever you see this type of YouTube that start giving you recommendations about some other things related to your search. For example, आपने suppose करो आपने कोई वैसे Google search करते हुए suppose you want to buy shoes, आपने shoes के लिए कुछ search किया, फिर आप जब YouTube पे जाएंगे, जब आपने कुछ भी search करेंगे, आपने देखा है साइड पे आपको advertisements आनी शुरू हो जाती है. That are nothing but recommendations. अगर आपने कुछ सैड सॉन्ग सुना, तो सैड सॉन्ग सुनने के बाद आपको और रिकमेंडेशंस और सैड सॉन्ग्स, मतलब आपका जो सिस्टम है, इट इज एबल टू आइडेंटिफाई योर मूड, दैट यू आर इन अ मूड ऑफ लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स या एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ थिंग्स. सो नेटफ्लिक्स, ये सारी जो चीजें हैं, दे वर्क ऑन रिकमेंडेशन सिस्टम. What they do, they just analyze the data, whatever you are doing on YouTube, on Google, whatever you are searching, Netflix पे आप क्या क्या movies देख रहे हैं, क्या क्या आप activities कर रहे हैं, उसके basis पे this data is analyzed and the system starts giving you recommendations, similar type of things. The driverless cars, Google की है, अभी तो there are various companies इन्होंने driverless cars निकाल दिए हैं. Otherwise, Tesla and Google, they are the most popular companies जिन्होंने ये start किया था. And how these driverless cars they are working? Again, can you tell me? अगर आपने
अभी तक आपने किसी भी टाइप के किसी भी जो रोड्स हैं उन्हीं रोड्स पे इफ यू आर ट्रेनिंग इफ यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल, मतलब आपने जो मॉडल इस टाइप से बनाया दैट यू हैव ट्रेन्ड on some specific type of roads. Those type of roads we can make these cars to move without driver. There are various sensors or cameras are installed and they'll be able to sense the things. आगे क्या आ रहा है, कहाँ पे कौन सा लेफ्ट टर्न लेना है, कौन सा राइट टर्न लेना है, कब लेना है, कहाँ पे लेना है, under which circumstances you have to perform which action. On the basis of those things, these driverless cars are working. Again, an application of artificial intelligence. This is smart farming. जो आपके जो फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स हैं, they are making use of all these robots. जित कुछ भी काम करवाना है, आप इन रोबोट्स में कैसी प्रोग्रामिंग करी है, कैसे आपने उनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया है, और वी कैन से कैसे आपने उनको ट्रेन किया है, उसके बेसिस पे वी कैन यूज स्मार्ट फार्मिंग. लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज फार्मर्स जो हैं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो फार्मर्स जो हैं, सपोज दे हैव लार्ज फील्ड्स, राइट, और उन्होंने सपोज टोमेटोज की अपने फील्ड्स लगा रखे हैं, और अगर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी जो फसल है इसको कीड़ा लगना तो नहीं शुरू हुआ, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू कैन कम अप विद एन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, जिसमें कि आप उस प्लांट की एक पिक्चर क्लिक करेंगे, वो पिक्चर आप अपलोड करेंगे उस मोबाइल एप्लीकेशन पे, एंड इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिजीज कि इसको डिजीज लग रही है या नहीं लग रही है, एंड देन यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. द फार्मर्स कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. बट हाउ दे आर एबल, हाउ योर सिस्टम इज एबल टू आइडेंटिफाई कि उसको वो कीड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, दैट इज जो टेक्निक्स हैं उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? Can anybody guess what is it? Can anybody guess what is it? ये ग्राफ किस चीज के लिए ग्राफ हो सकता है? ये this is for stock market prediction. Yes. So stock market prediction में suppose we are having sufficient data for the previous years. This data is known as historical data. We are having this data. On the basis of this data, we can guess or we can predict how a stock is able to perform in the coming days or in the coming year. जैसे आपका weather prediction होता है ना? वेदर प्रिडिक्शन के लिए आपने एप्स देखी हैं. देयर आर वेरियस एप्स फॉर द वेदर प्रिडिक्शन. weather.com इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल. तो आप क्या करते हैं, कुछ भी काम करना हो तो हम सबसे पहले वेदर चेक करते हैं कि वेदर कैसा है. तो हाउ इट इज एबल टू प्रिडिक्ट वेदर? ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, राइट? ओके, लेटर ऑन आई विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल इन डिटेल. So there is basically artificial intelligence is an umbrella term. It covers many things under it. So machine learning, deep learning, all these come under artificial intelligence. So machine learning is nothing, but it is a field of artificial intelligence, right? Have you ever heard the name machine learning? नाम सुना है सभी ने? सभी ने नाम सुना हुआ है machine learning. So machine learning is nothing but it is the study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Okay, leave these definitions apart. These are the definitions which are given by these authors. Leave these applications apart. Let me explain. In another thing, learn means we are making our machines to learn, right? But here in this case, suppose हमारा छोटा, हम उस बच्चे को कैसे
कोई चीज सिखाते हैं। फर्स्ट टाइम सपोज वो बच्चे को नहीं पता कि एप्पल किसको बोलते हैं, बनाना किसको बोलते हैं, हम उसको कैसे सिखाते हैं व्हाट इज एप्पल। हम उसको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, और बच्चे को कहीं ना कहीं हम ये देखो ये रेड कलर का है, या उसका ये गोल ये शेप है, या इसका ये टेस्ट है, उसके बेसिस पे बच्चे को एक बार आप देंगे उसको खाने के लिए, उसने टेस्ट देखा, उसने उसका साइज देखा, उसने शेप देखी, कलर देखा, उसको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि दिस इज एप्पल। अगर 3-4 दिनों के बाद आप दोबारा से उसको एक बनाना देते हैं, तो या वो उसको समझ आ जाएगा दिस इज नॉट एप्पल, ना तो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एक बॉल दे दी, बॉल रेड कलर की बॉल, तो बच्चे को पहले क्या लगेगा, ही विल स्टार्ट ईटिंग इट। हमने देखा है छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, वो कुछ उसके हाथ में आया वो खाना शुरू कर देगा, उसको लगेगा ये एप्पल है, राइट। तो उसको फिर लगा कि नहीं ये एप्पल नहीं है, जब खा के देखा ये एप्पल नहीं है। सो अनदर एग्जाम्पल, स्टूडेंट दैट किड इज लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स। फिर हमने थोड़े दिनों बाद फिर उसको ग्रीन कलर का एप्पल दिया। अब थोड़े उसका डेटा में और उसका जो एक्सपीरियंस है उसमें उसको और चीज ऐड होगी कि एप्पल जो है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है या येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस वे, with experience, what we are doing, with experience we learn. Just like that, a computer program learn from experience. जैसे experience से human beings learn करते हैं, that is how a computer program is said to learn from experience with some class of task and performance parameter. What is performance parameter? Performance measure means वो ठीक से उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। हम उसको गेस कर रहे हैं कि उसने एप्पल को ठीक से आइडेंटिफाई किया या नहीं आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और उसकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे जैसे हम उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा होगा, ऑन द अदर हैंड आई कैन से जैसे जैसे उसका डेटा इंक्रीज होगा, तो उसका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज, right? If we leave this definition apart, we'll say what is machine learning, in which we make our machines learn. हमारी मशीन लर्न कैसे करेगी? उसको लर्न करने के लिए it needs data, it needs here some experience is nothing but it is data, right? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था वेदर प्रेडिक्शन का एग्जांपल, वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग में सपोज वी हैव अ डेटा of previous 10 years, which is known as historical data. I'm having a data of previous 10 years, and what type of that data is, it is saying, it is having some features. Okay, features क्या है? It is saying that if the temperature is this much, pressure is this much, wind speed is this much, तो मौसम कैसा होगा, जो वेदर है वो कैसा होगा। दिस इज डेटा, ये पिछले 10 साल के डेटा से हमने मशीन को लर्न करा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फीचर्स एंड देयर इज वन आउटपुट व्हिच इज एसोसिएटेड विद दीस फीचर्स एंड व्हिच इज सेइंग दैट इट वुड बी अ हॉट डे इफ टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, विंड स्पीड इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है एंड सो ऑन, राइट। अब जब उस जितना ज्यादा हमारे पास डेटा रहेगा उतना ज्यादा हम कहेंगे एक्सपीरियंस हो गया, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा मशीन जो है वो लर्न करेगी। वो मशीन ने जब लर्न कर लिया, हाउ वी विल चेक वेदर आवर मशीन हैज लर्नड समथिंग और नॉट, व्हाट विल डू, वी विल नाउ गिव अनदर एग्जांपल। मैंने आज का दे दिया, आज प्रेशर कितना है, विंड कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। नाउ दैट सिस्टम will be able to predict कि कल मौसम कैसा होगा। So this is how these weather prediction applications or system works. Okay. So let me take an example how our machine learning systems, they are different from traditional programming. Okay. Traditional programming, you must have done C programming language or Python language or C++, कोई भी language की होगी. Can you tell me how these languages are different from machine learning?
आपका जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है, आपकी सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, वो बेसिकली काम कैसे करती है, उनका ओवरव्यू क्या है, हाउ दीज लैंग्वेजेस वर्क। आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, पहले आप डिजाइन बनाते हैं, फिर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आप उसको कैसे टेस्ट करते हैं, यू गिव सम इनपुट, that is nothing but data. Please see the picture here. We are giving some data. We are having a program जो आपने कंप्यूटर पे लिखा, ठीक है, उसको कंपाइल किया, उसको एग्जीक्यूट किया, अब उसमें आपने एक इनपुट दिया, what you'll get some output. Is it okay? Is it okay? This is for traditional programming. Now see how it is different from machine learning. In machine learning, we do not need to write the steps, or we do not need to write some steps or instructions for creating the model. The model will be created by the data and output. See how it is different. I'm giving some data and output. What is this data? Data is related to those features. What would be the humidity? What is pressure? What is wind speed? And what is output? Whether it is a hot day, or it is a rainy day, or it is some other day. This is output. So this is what I am giving. I am giving a data which consists of some features and some output. Output कहने को मैं ये कहूंगी, एक आपको आंसर की गिवन है, सपोज आंसर की गिवन होने का मतलब है कि मैंने ये बता दिया कि लेबल क्या है, अगर ये फीचर्स हैं तो कौन सा जो है वो हॉट डे होगा, कौन सा डे होगा, ठीक है। एंड व्हाट इट विल गिव मी, इट विल क्रिएट अ प्रोग्राम क्रिएट करने का मतलब है इट विल गिव अ मॉडल टू मी। अब वो मॉडल कैसे बना, दिस मॉडल हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। This is how machine learning is different from traditional programming. I'm repeating. Traditional programming mein, you need to write a logic. You need to create a logic. You need to create a design, to write set of instructions. You give some input and you get some output. But here, in case of machine learning, you give some input data. That input data consists, that should be large amount of data. जितना ज़्यादा data होगा, उतना ज़्यादा आपका ये program बनेगा, उतना ज़्यादा अच्छा ये program बनेगा। ये this is basically program, इसको हम model, this is a model. So we are giving some input, okay, consisting of some data, along with the output, and it will create a model for us. This is how machine learning is different from the traditional program. Any doubt till this point? Any doubt, please? Okay, shall we continue? Right. Oh, sorry. Okay, now the question arises, machine learning is not a new field. Artificial intelligence and machine learning, these are not new fields. These are very old, and machine learning, I think it came into point in 1959. In 1959, it was coined. And why machine learning is becoming popular nowadays? इतनी पुराना concept है machine learning का, but nowadays it is becoming very popular. Why it is so? It is because of some points that I'm going to discuss now. Why machine learning is becoming so popular nowadays. Okay, so first thing I would say, because nowadays, due to advent of internet or due to digitization, there is a large amount of data. And due to this large amount of data, because I told you machine learning उतना ही अच्छा मॉडल बनेगा जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा. So with digitization, we are having a large amount of data. That is why machine learning is becoming so nowadays. Nowadays, we want to automate the things. We want to customize the things. For example, हमें अपने inbox में क्या चाहिए? We want some personalized news.
we need mail filters. We want to automate the things, and that is why we can these things can be customized as per the need of individual users. Okay, this is why that is why machine learning is there, and discover new knowledge from the large databases. What does it mean? Let me take one example to make you understand this point. Discover new knowledge from large databases. Suppose there is a large database. Let me take one example from e-commerce. ओके जैसे आपकी जो ये वेबसाइट्स होती है Amazon और ये जहां से हम कुछ भी चीजें जो है वो परचेज करते हैं, यू नो, वो सारा डेटा जो हम परचेजिंग कर रहे हैं, हमने कब परचेज किया, क्या चीज परचेज की, और उसमें जो है कितने की परचेज की, वो सारी चीजें जो है उनका वो डेटाबेस बनाते हैं. एंड व्हाट दे डू, दे try to discover new knowledge from the large databases. If I take a simple example, let's take the example from our daily life. Suppose करो हमारे घर के पास एक शॉप है, ठीक है, वो अंकल जो है वो दूध बेचते हैं और ब्रेड रखी है उन्होंने, दूध और ब्रेड रखा है, ठीक है. अब हुआ क्या, कोई कस्टमर उनके पास गया, उसने उनसे दूध खरीदा, उनसे ब्रेड खरीदी और पूछा कि क्या आपके पास बटर है. अंकल से पूछा कि आपके पास बटर है, लेकिन अंकल के पास बटर नहीं था. ओके, कोई बात नहीं. कोई और कस्टमर आया, उसने भी लिया, दूध लिया, ब्रेड भी ली, क्योंकि कोई दूध खरीदेगा तो बहुत चांसेस रहते हैं कि वो ब्रेड भी खरीदता है ऐसा. और उसने एग्स के लिए पूछा कि आपके पास अंकल एग्स हैं. अंकल के पास एग्स भी नहीं थे. अब हुआ क्या, पूरे दिन में वो शॉप में 10 कस्टमर्स अगर ऐसे आए जो जब दूध और ब्रेड खरीद रहे हैं वो साथ में एग्स के लिए पूछ रहे हैं या बटर के लिए पूछ रहे हैं, तो अंकल क्या करेंगे, उन्होंने कल से अपनी इनकम बढ़ाने के लिए he also started keeping eggs as well as butter in the shop. You just try to understand. This is known as market basket analysis. मार्केट बास्केट एनालिसिस. व्हाट डज इट मीन कि आपने कोई चीज खरीदी, आपका जो डेटाबेस, आपने कुछ भी खरीदा, बहुत सारे कस्टमर्स ने कुछ सामान खरीदा और उसका एक डेटाबेस बन गया. नाउ पीपल आर एनालाइजिंग, Amazon is analyzing that database and the Amazon is, the company is, the people जो developers हैं वहां पे, जो data scientists हैं, they are trying to discover new knowledge from the large databases. और वो क्या new knowledge है, वो ये new knowledge है कि अगर कोई person ये चीज खरीद रहा है तो वो साथ में और क्या चीज खरीद सकता है. That is known as market basket analysis. So market basket analysis जो है, it is just to improve the income. कस्टमर्स की नीड. अब मैं सपोज करो मैं Amazon से कोई चीज खरीद रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई दाल खरीदी, मैंने एक चावल खरीदी, तो एक स्टार्ट गिविंग मी अनदर रिकमेंडेशन ऑफ, साथ में मेरे को रिकमेंडेशंस, मेरे को वो आना शुरू हुआ कि जिसने दाल और चावल खरीदे वो शायद आटा भी खरीदेंगे साथ में, ठीक है. So this is known as market basket analysis. So this is just to discover the new knowledge from the large databases. It is also known as data mining. ठीक है. Then flood of available data. मैंने आपको बताया why machine learning is becoming so popular nowadays, because your machine learning model will be accurate if a large amount of data you are making use of to create that model. Okay, because nowadays due to the advent of internet or digitization, we are having a large amount of data, and thus we can create accurate machine learning models. एक और बहुत important reason है increased computational power. पहले machine learning इसलिए इतना popular नहीं थी क्योंकि computational resources are required. A large amount of computational resources are required in order to train the machine learning models. But nowadays we are using GPUs, graphical processing units, और आपके पास TPUs हैं, तो उनके लिए, उनके साथ क्या है, आपके पास computational power जो वो increase हो गई है, ठीक है. तो उसके साथ there is a best combination, large amount of data,
we are having computational power, we want this, we want to increase our income. That is why machine learning is becoming so popular nowadays. Am I clear? So now there are some types of machine learning, जो बिल्कुल basic types of machine learning I'm going to discuss. These are basically supervised, unsupervised, semi-supervised, and reinforcement learning. Right? So first of all, let us see what is the meaning of supervised learning. Supervised learning का मतलब हुआ learning through examples. Okay? Learning through examples. What does it mean? मैंने आपको बताया, आप you must have data. किस चीज के लिए आपको एक डेटा चाहिए जिसमें आपके पास कुछ फीचर्स हैं, कुछ आउटपुट है और आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट सुपरवाइज्ड लर्निंग. इट मींस यू आर ट्रेनिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा मींस द डेटा फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू ट्रेन योर मॉडल includes desired outputs. Desired outputs should be there. मतलब आपके पास जब आपने एक, मैं अगर कुछ फीचर्स लिए, मैंने एक फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, मैंने उसको लेबल कर दिया कि अगर ये वाले फीचर्स हैं, इट मींस इट इज स्पैम ईमेल. ओके, आउटपुट इज गिवन. और if it is non-spam email, it means the features, the values of the same features are this and this. ये वाला जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, जिसमें आपके पास डिजायर्ड आउटपुट भी होती है, दैट इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है? सुपरवाइज लर्निंग इन अदर वे वी कैन से, आपको आपके टीचर ने क्वेश्चंस दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के लिए, और आपको साथ में कीज भी दे दी, उसकी आंसर्स भी दे दिए उसके. ठीक है, आंसर्स भी दे दी. मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ये चीजें हैं तो इसका आंसर ये है, अगर ये चीजें हैं तो इसका आंसर ये है. अब आपका इस ट्रेनिंग डेटा से जो आपका मॉडल क्रिएट होगा, दैट मॉडल विल बी एबल टू डू प्रिडिक्शन ऑन द न्यू डेटा. ये तो ट्रेनिंग डेटा है, ये तो हमने प्रोवाइड किया, लेकिन द थिंग इज डिजायर्ड आउटपुट्स आर आल्सो देयर. मतलब जो लेबल है दैट इज आल्सो देयर इन योर डेटा. But if labels are not there, sometimes we are having a data जिसमें ट्रेनिंग डेटा के पास सिर्फ जो है, ट्रेनिंग डेटा के पास सिर्फ फीचर्स है, सिर्फ डेटा है, there is no output, there is no label, then this type of learning is known as unsupervised learning. ओके, मतलब आपको क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, साथ में आपको टीचर ने आंसर्स प्रोवाइड नहीं किया, आपको टीचर ने सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किया. ठीक है? ओके, सेमी सुपरवाइज्ड इज अ मिक्सचर ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, जिसमें कुछ डेटा ऐसा है जिसमें आपके पास लेबल्ड आउटपुट्स हैं, बट कुछ डेटा ऐसा है जिसमें आउटपुट्स नहीं है. राइट? नेक्स्ट इज reinforcement learning. Reinforcement learning means here, if you are performing some actions, you'll get some rewards. Okay, we'll see it later on with a suitable example. So अगर मैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करूं, अगेन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो डेटा है, उसकी जो आउटपुट है, जो लेबल है, that is having some discrete values or that is having some categorical values. For example, spam filtering. स्पैम फिल्टरिंग में आपके पास जो डेटा गिवन है, डेटा की आउटपुट जो है वो ये है, स्पैम है या नहीं है, स्पैम है या नहीं है, देन इट इज लेबल्ड. और ये दो ही आउटपुट्स हैं, डिस्क्रीट आउटपुट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. Another example, let me take, suppose I am having some images. ठीक है, उन इमेजेस में एप्पल की इमेजेस हैं, बनाना की इमेजेस हैं, और कोई और फ्रूट है, सपोज उसकी इमेजेस. ठीक है, 3 टाइप के फ्रूट है हमारे पास. उसका फीचर है कि ये जो फर्स्ट फीचर है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, एंड वी आर सेइंग इट इज एप्पल. ठीक है, कोई सेकंड के लिए अगर हम बोले उसका शेप क्या है, या उसका साइज क्या है, या उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन, आप उसका कलर दे रहे हैं, नाउ इट इज बनाना. Once you have created the model with this data, you'll be able
to classify the new example or the unknown example into whether it is apple or it is banana. Right? This is classification. जब आपके पास output जो है, they are having discrete values, they are fixed. But if your outputs are not fixed, then it is known as regression. Output is not fixed. मतलब output is having some real values. For example, stock market prediction, or we can have an example of house price prediction. अब हाउस प्राइस को जब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो वो कुछ रियल वैल्यू में आप प्रिडिक्ट करेंगे. आप कहेंगे अगर हाउस में 2 रूम सेट है, इतने वॉशरूम्स हैं, उसकी लोकेशन ये है, सनी साइड पे है या नहीं है, तो ये these are the features. Now we are predicting the price. अब वो प्राइस जो है, that is not a discrete value, that is having some continuous output value. Output जो है, that is some continuous value, some real value. So if the predicted value is continuous, then it is known as regression. If the predicted value is some discrete value or some categorical value, then it is known as classification. Right? So stock market prediction, house price prediction, these are the examples of regression. Next is unsupervised machine. Okay, do you remember? अभी 2 slides पहले I discussed what is unsupervised machine learning. What is it? What is unsupervised machine learning? Yes, anyone please? Let me check आपको कुछ interesting. Yes, beta, are you getting the things? अरे भाई कुछ बोलो तो. Are you getting? मैम जो अनसुपरवाइज्ड एमएल है उसमें मतलब जो प्रेडिक्शंस होती है उनमें कुछ सम प्रेडिक्शंस की आउटपुट होती है, मतलब जितनी प्रेडिक्शंस होती है उसमें डाटा या फिर आउटपुट होता है, डाटा या फिर आउटपुट होता है उसमें मतलब मैक्सिमम के बारे में नहीं होती, तो उसका आउटपुट नहीं, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती बेटा. जो अनसुपरवाइज्ड है उसमें आपके पास सिर्फ फीचर्स होंगे, उसमें उसकी वैल्यू नहीं होगी कि वो है क्या, वो प्रिडिक्शन क्या होगी, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी, इवन कोई वैल्यू भी नहीं होगी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड, मतलब जिसमें आउटपुट लेवल इज नॉट प्रेजेंट. अब देखिए, जैसे मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आपके पास कुछ चीजें हैं जो इकट्ठी पड़ी है यहाँ पे. वी डोंट नो व्हाट इज इट. ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, बट यहाँ पे प्रिडिक्शन किस टाइप की प्रिडिक्शन होगी? हियर some clusters will be created, some groups will be created on the basis of their similarities. जो similar type की things है उनका एक group बन जाएगा, जो दूसरे similar type की things है उनका दूसरा group, but we cannot name that group. We do not have the name of that group. But in case of supervised machine learning, we are having some name, और वो name हमारे पास कहाँ से है? जो आपके पास data set है, उसी data set में आपके पास output में एक label है that it is dog. तो कुछ फीचर्स साथ में डॉग, कुछ फीचर्स साथ में कैट. सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर ऐसे, नॉट वी, जो मॉडल क्रिएट हुआ, इट इज एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर ये वाले फीचर्स हैं तो ये डॉग होगा. तो मॉडल ने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया कि अब आपके पास आप नए फीचर्स देंगे, उन फीचर्स को मैच करके इट विल बी एबल टू टेल यू वेदर इट इज डॉग और इट इज कैट. ओके, बट अनसुपरवाइज्ड में जो आपके पास डेटा है, उस डेटा में आउटपुट लेवल इज नथिंग, देयर आर ओनली फीचर्स. अब जैसे देखिए ये वाली जो एग्जांपल है, ये जो मेरी स्लाइड पे जो एग्जांपल है, इसमें देयर आर मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, बट आफ्टर अप्लाइंग unsupervised machine learning, we are able to make clusters of different things. ठीक है, हमें नहीं पता ये आलू है, प्याज है, ये दिख रहे हैं आपको, लग रहे हैं आलू प्याज जैसे, बट वी हैव नॉट गिवन देम नेम. Right?
And what is सेमी सुपरवाइज्ड? सेमी सुपरवाइज्ड में क्या होता है? देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, सेमी सुपरवाइज्ड के केस में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. Unsupervised, sorry, semi supervised के केस में there will be few examples which are having output names, ठीक है, and there are some examples which are which do not have any name. It means it is a mixture of both. Okay, and now we'll try to understand the meaning of reinforcement learning. Now reinforcement learning. Now say what is reinforcement learning? Let me take an example from the daily life. Suppose you are learning to drive a cycle. ठीक है, you are learning to drive a cycle. That is, अब कैसे आप एक जब साइकिल चलाना जब सीखना शुरू करते हैं, क्या करते हैं स्टार्टिंग में? आप कुछ, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे चलानी है साइकिल, तो शुरू में तो हमने चलानी शुरू करी, गिर जाओगे आप, फिर आपको समझ आएगा नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है तब नहीं गिरेंगे. ओके, फिर आप उसको सीधे जाके अगर आप सड़क पे चलाने तब तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा. और अगर आप एक ग्राउंड में कहीं पे चलाएंगे या आपको नीचे कारपेट बिछा के फिर चलाना है, सो व्हाट इज हियर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स. ठीक है, जैसे जैसे कुछ मिस्टेक, कुछ भी, यहाँ पे एक एजेंट है हु इज डूइंग समथिंग, देयर इज वन एनवायरनमेंट. व्हेनेवर एजेंट डज एनी एक्शन, तो उसका एक रिवॉर्ड मिलता है. वो रिवॉर्ड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड के बेसिस पे एजेंट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है. आपने ये देखा, अगर आपने गेम्स खेली हो, जो आपकी कंप्यूटर गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स या कुछ एआई से रिलेटेड, सपोज चेस, अगर आपने कंप्यूटर के साथ अगर चेस खेला हो, तो वो वाले जो गेम्स हैं दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. जैसे जैसे वो, मतलब वो वहां पे एआई मॉडल जो है, जहां मशीन लर्निंग है, इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस. अगर उसको कुछ रिवॉर्ड मिला, अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, तो वो उसको वो ले लेगा कि ये मेरे को ऐसे ही करना है, ऐसे करना है, मतलब आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिवॉर्ड. कहीं पे अगर उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस चीज को डिस्करेजमेंट मिलती है, ताकि नेक्स्ट टाइम से, मतलब इट लर्न्स विद टाइम on the basis of the rewards it is getting, whether it is positive reward or negative. Okay, so this is reinforcement learning. So next I'm going to explain what is the workflow of machine learning. Okay, workflow of machine learning means how does a machine learning work. So सबसे पहला, इस फिगर को छोड़ते हैं, मैं आपको वैसे बताती हूँ. सबसे पहला जो स्टेप है, that is data collection. So first step for creating a machine learning model में जो सबसे first step है, that is your data collection. अब data आप खुद से भी collect कर सकते हैं, या जब आप machine learning की field में आएंगे, you'll get what people does. They create data and they put this data in the repository. ठीक है, कुछ रिपोजिटरीज हैं, अगर आपने नाम सुना हो, कैगल रिपोजिटरी है, यूसीआई रिपोजिटरीज है, वहां पे स्टैंडर्ड डेटा सेट्स पड़े हुए हैं. एंड दोज डेटा सेट्स वी आर मेकिंग यूज फॉर ट्रेनिंग द मॉडल. Okay, so first we have collected the model. After that, what we do, we take some training data from the model. Okay, so जब आपने ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा लिया, that data is used for training your model, right? यहाँ पे आपने क्या किया, अपने मॉडल को लर्न किया. And once the model is created, then that model is evaluated on the test data. और उस मॉडल का जो इवैल्यूएशन आप करेंगे, जो टेस्ट डेटा पे इवैल्यूएट करेंगे, इफ इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स देन इट्स ओके. बट अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आपके पास आ रहे हैं, देन व्हाट डू? यू अगेन डू सम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, यू अगेन मेक योर मॉडल, यू अगेन ट्रेन योर मॉडल, एंड देन अगेन यू इवैल्यूएट इट. ठीक है, और ये जो है, ये है ट्रेनिंग डेटा के लिए ये सब कुछ होता है.
लेकिन जब आपने उसको टेस्ट कर लिया एक बार, इफ इट इज वर्किंग फाइन, देन यू कैन मेक प्रेडिक्शंस विद द टेस्ट डेटा. ओके, यू कैन मेक प्रेडिक्शंस विद द टेस्ट डेटा. अब टेस्ट डेटा पे जो है जब प्रिडिक्शन करेगा, नाउ यू कैन चेक विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म. दिस इज हाउ आवर मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स. शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? अब मशीन लर्निंग में बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ, ये एग्जांपल है, ये ऐसा होता है, ये यहाँ ऐसी एप्लीकेशन है, बट ये वर्क कैसे करता है? फर्स्टली यू आर हैविंग डेटा, देन you divide that data into two parts. Around 80% of data you take for training because more data is required for creating the model. So 80% data you have taken for creating the model, and only 20% data you are using for testing purposes. Once you have created the model, you'll test it on the test data. तो टेस्टिंग करने के लिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो आपको ये बताते हैं, क्योंकि एक आपके पास आपके डेटा में ऑलरेडी एक लेबल था जो पहले उसने प्रेडिक्शन किया था. अब नए डेटा पे, जो टेस्ट डेटा पे आपने अगेंस्ट प्रेडिक्शन किया, अब उसने क्या प्रेडिक्शन किया, यू विल मैच दोस प्रेडिक्शंस. इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो आपका मॉडल 99% एक्यूरेसी दे रहा है, 98% एक्यूरेसी दे रहा है, उसके बेसिस पे वी फाइनलाइज द मॉडल एंड देन दैट मॉडल कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन द न्यू डेटा. So that's all about the basics of machine. Please let me know if there is any question. Yes, please let me know if there is any question. So next is चैलेंजेस में अगर हमने देखी मशीन लर्निंग मॉडल, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ अगर आ गया है अगर कि मशीन लर्निंग मॉडल होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, वी कैन से जो मशीन लर्निंग में जो चैलेंजेस है, द मेन चैलेंजेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा. बिकॉज जैसा आपका डेटा होगा वैसा ही आपका जो है मॉडल बनेगा. अगर आपका डेटा की क्वालिटी इज गुड तो आपका मॉडल की क्वालिटी भी गुड होगी. लेकिन अगर डेटा नॉइजी डेटा है, डेटा बहुत अच्छा नहीं है, इफ डेटा इज बायस्ड, देन इट वॉन्ट बी अ गुड मॉडल. ठीक है, देन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स द डेटा दैट यू आर मेकिंग यूज ऑफ शुड बी compared with the benchmark data sets. जो भी मॉडल आप बना रहे हैं, that should be, जब आप उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो कितना अच्छा मॉडल है, it should be tested on the benchmark data sets. Security, there are a lot of attacks which are possible in the on your models. तो वो attacks जो हैं, that is another challenge. उन attacks को कैसे deal करना है. Scalability means अगर आपने अपना डेटा इंक्रीज कर दिया, अपने मॉडल को अगर आप स्केलेबल बनाना चाहते हैं, यू नीड computational resources. तो अगर आपके पास computational resources हैं, enough computational resources हैं, it means your model will work fine. But अगर computational resources नहीं है तो आपका डेटा को आप ट्रेन करने के लिए, आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए कई कई दिन लग जाएंगे. जैसे अगर अभी तो अगर मैं बहुत बड़ा अगर एग्जांपल ना लूं, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स जो काम करते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लेते हैं, सपोज करो दे हैव टेकन 4000 इमेजेस फॉर ट्रेनिंग योर डेटा. तो 4000 इमेजेस से अपने डेटा को ट्रेन करवाने के लिए यू नीड 6 to 7 hours ऑफ ट्रेनिंग. मतलब आप बिना कंप्यूटर को छुए बस आपको उसको चार्जिंग पे रखना है, वो 6-7 hours जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ले लेता है, उसके बाद आपका मॉडल क्रिएट होता है. सो कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज इज अ बिग चैलेंज. जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उतनी ज्यादा आपको कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए. Okay, then continuous learning means suppose you have trained your model on one type of data. Okay, अब आपके पास नया डेटा, रोज के रोज नया डेटा जनरेट हो रहा है और डेटा आ रहा है, तो you need to update your models with continuous learning. जो अभी रिसेंटली जो डेटा आ रहा है, अभी जो नया डेटा आ रहा है, उसके साथ भी आपको उसको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा. एंड देयर आर रेगुलरिटी एंड लीगल इश्यूज. एआई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. कितना लीगल है, कितनी चीजें जो है वो कितनी लीगल है. अभी तक हमारे कंट्री में एआई से रिलेटेड जो है
there are no rules and regulations. For example, suppose करो किसी अब जैसे कुछ एक एक्सरेज की अगर आपके पास इमेजेस हैं, ठीक है, तो एक्सरेज की इमेजेस से वी कैन चेक कि किसी पर्सन को कोविड है या नहीं, कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। आपने एक मॉडल बनाया, मशीन लर्निंग या एआई मॉडल बनाया आपने, जिसको आपने ट्रेन किया किससे, कुछ एक एक्सरे से, आपको पता था ये एक्सरेज की इमेजेस हैं, और ये अगर ये एक्सरे की इमेज है, ये इमेज उस एक्सरे की है, उस चेस्ट एक्सरे की है जिसको कोविड है, या ये वाली इमेज उस चेस्ट एक्सरे की है जिसको कोविड नहीं है। ओके, तो ये आपके पास जो डेटा है, आपका मॉडल बन गया। अब आपके पास एक नया चेस्ट एक्सरे आया जिससे आपने चेक किया उस एआई मॉडल से कि इसको कोविड है या नहीं। आपके मॉडल ने कह दिया कि इसको कोविड नहीं है, ठीक है, और वो उसने सोचा मेरे को कोविड नहीं है, सिंपल कोल्ड है। तो अब वहां से, अब सपोज करो उसके हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा सीवियर उसकी कंडीशंस हो गई, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो एआई को तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे ना, डॉक्टर्स पे तो लोग केस कर देते हैं, बट एआई को, जो टेक्नोलॉजी है, एआई जो यूज करें, रोबोट को या किसी एआई सिस्टम को, अभी तक उसको हम कैसे ब्लेम करेंगे? देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट। नेक्स्ट इज पब्लिक परसेप्शन एंड एक्सेप्टेंस। अभी people are not able to accept these AI type of models, मतलब they do not want to rely on the models, these AI type of models। हम कहते तो हैं कि ये जो मॉडल, ये हमने जो एक रोबोट बनाया, ये रोबोट ऐसा ऐसा काम कर देगा, ऐसे ऐसे, बट पर्सनली अगर हम देखें, we are not able to rely on that। And then there are ethical concerns which involve issues like privacy, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आपके पास बहुत सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, आपने एआई मॉडल को दी, आपने ट्रेन किया, एआई मॉडल बनाया, और एक नई मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एआई मॉडल को दी। आई विल नेवर हैंड ओवर दैट रिपोर्ट टू द मॉडल, क्योंकि मॉडल को जब गई तो वो किसी ना किसी पर्सन के पास चली। देयर आर सम प्रिवेसी कंसर्न्स, so that is why there are some ethical concerns as well. Okay, and if we see in the market for last 5 years, I can say there are a lot of machine learning jobs. कुछ लोग कहते हैं कि machine learning जो है, chat GPT जो है, वो लोगों की jobs ले रहे हैं, लेकिन reality ये है कि वो jobs, नई jobs create हो रही हैं basically, and different type of jobs like data scientist है, machine learning engineer, you can work as machine learning engineer, research scientist, computer vision engineer। computer vision engineer मतलब the engineer who works with images। अब वो इमेजेस हेल्थ केयर इमेजेस भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। एथिक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप हार्डवेयर, एआई हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, और टीचर तो बन ही सकते हैं, एजुकेटर और ट्रेनर तो बन ही सकते हैं हमेशा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी आपको जो डाउट्स हैं, यू कैन आस्क। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड, अभी you have done your पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, अभी आपके पास ऑप्शंस है। आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे आईआईटीज, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज ने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करी है मशीन लर्निंग पे, डेटा साइंस पे, और जो आपकी इन्हीं स्पेशलाइजेशंस पे यू कैन गेट लेटरल एंट्री। इवन इन आवर यूनिवर्सिटी, इन जेपी यूनिवर्सिटी, दे हैव स्टार्टेड न्यू कोर्सेज। वन इज देयर which is BTech in computer science, but they have started new specializations related to AI, machine learning and data science. The name of the course is BTech in computer science and engineering with specialization in AI and data science, or with specialization in AI and machine learning. So यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं, what we do from the second year, there in every semester there is a course, one or two courses which are related to machine learning or deep learning. All the projects will be doing on machine learning. So that is another way to pursue your higher studies. उसके बाद फिर आप चाहें, अगर आप रिसर्च करना चाहें, you can go for MTech or PhD। अगर आपको BTech के बाद जॉब लेनी है
So you can go in such profiles that I have discussed. That's all from my side. If you have any question, please let me know. You should ask questions, students. You should ask questions. जितना मैंने बताया, अगर उसमें से आपको कोई भी एग्जाम्पल में, चाहे आपको लग रहा है क्या मैं सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना प्लीज. आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है रिलेटेड टू डेटा साइंस, रिलेटेड टू मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, उनके बेसिक से रिलेटेड. अभी तो थ्योरी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं. आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स ओनली with examples. So if you have any doubt, please let me know. I would be more than happy to take your questions. So any question from Kangra Polytechnic? So ma'am, I think we should conclude the session. Good evening, good afternoon, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On the behalf of Government Polytechnic Hamirpur and the Department of Computer Science and IT, I, Dr. Amit Nair, here extend my heartfelt gratitude to our esteemed expert, Dr. Ekta Gandotra. She is Associate Professor at JP University, Bhatnagar, we all know, as our Ritesh sir has introduced her. And a special thank to the head of IT department for coordinating the event. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all you for present here and making your time to be with us for today and helping us to make this event a grand success. Thank you one and all. And I would, in the future also, I would like to organize such wonderful lectures. And whenever the ma'am has some time, we will definitely want to interact with ma'am on some more advanced topics in AI, like reinforcement learning. It is a very big topic which can be further researched. And here she just provides the introduction to the machine learning techniques. But every technique is a big topic to be researched. So with this, I would like to thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Amit sir. Okay, thank you very much, ma'am. Let me stop the recording first.